I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th and today we are on sample paper number 28. So आज हमारा 30 days sample paper challenge का 28th day है and we are only left with 2 more sample paper. So अभी तक आप लोगों को पैटर्न पता लग चुका है completely कि कैसा पैटर्न है, कैसे पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो टाइम अलॉटेड वही है, जनरल इंस्ट्रक्शंस वही है, मैक्सिमम मार्क्स वही है, बस क्वेश्चंस चेंज है. सो वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन ए और सेक्शन ए की बात करूँ तो रीडिंग पैसेज है और रीडिंग पैसेज में 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स ईच. सो इन शॉर्ट जो सेक्शन ए है आपका वो पूरा का पूरा 20 मार्क्स का है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, रीडिंग पैसेज है और ये रीडिंग पैसेज करने से पहले एक बार हम इसका क्वेश्चन रीड करते हैं. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन. Alright, what does the writer mean when he says that the color of animal is by no means a matter of chance? ठीक है, तो क्या है the color of animal is by no means a matter of chance. ठीक है, अब राइटर इस लाइन से क्या मतलब है? It is an evolutionary advantage, it is contradictory, it is predetermined or it is a matter of chance. क्लियर. सो अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं. ठीक है, उसका आंसर पैसेज में फाइंड आउट करते हैं. द कलर ऑफ एनिमल इज by no means a matter of chance. It depends on many considerations, but in the majority of cases tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous. Perhaps it may be said that if coloring is mainly protective, there ought to be but few brightly colored animals. There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective. The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonies with the water and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight. Desert animals are generally the color of the desert. Thus, for instance, the lion, the antelope and the wild donkey are all sand colored. Indeed, says Canon Tristram, in the desert where neither trees, brushwood, nor even undulation of the surface afford the slightest protection to its foes, a modification of color assimilated to that of the surrounding country is absolutely necessary. Hence, without exception, the upper plumage of every bird and also the fur of all the smaller animals and the skin of all the snakes and lizards is one of uniform sand color. Clear? उसके आगे क्या mentioned है? The next point is the color of mature caterpillars, some of which are brown. This probably makes the caterpillar even more conspicuous among the green leaves than would otherwise be the case. Let us see then whether the habit of the insect will throw any light upon the riddle. What would you do if you were a big caterpillar? Why, like most other defenseless creature, you would feed by night and lie concealed by day. So do these caterpillars. When the morning light comes, they creep down the stem of the food plant and lie concealed among the thick herbage and dry stick and leaves near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color really becomes a protection. It might indeed be argued that the caterpillars having become brown concealed themselves on the ground and that we were reversing the state of things. But this is not so, because while we may say as general rule that large caterpillars feed by night and lie concealed by day, it is by no means always the case that they are brown. Some of them still retaining the green color. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day came first and that the brown color is a later adaptation. So, what does the writer mean when he says the color of animal is by no means a matter of chance? So, it is not by a matter of chance. So, it is an evolutionary advantage, or it is contradictory, or it is predetermined, or it is a matter of chance. So, yes, we can say that it is an evolutionary advantage. ये एक evolutionary advantage है. ठीक है. What makes the writer contradict his own statement that the color of animal helps protect them from the danger by making them less conspicuous to predators? ठीक है, तो हमने ये अभी पढ़ा कि there are many cases जिसमें जो animal है, brighter color के animals है, वो अपने आप को protect कर लेता है. इसमें kingfisher का भी example आपको दिया हुआ था. ठीक है, so perhaps there ought to be a few but brightly colored animals. ठीक है,
There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective. The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonies with the water and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight. Clear? तो इसमें आपने यही आंसर करना है. Let's read the answer. There are many cases in which bright colors of animals or birds actually help them protect themselves. For example, kingfisher's blue body merges with the blue of the water and its silver color becomes one with sunlight, making it present difficult to discern. Clear? Now we have to complete the sentence appropriately. The author's contention that assimilation with the background is a necessity for all desert animal for sheer survival can be sustained with the fact that जितने भी birds, mammals और lizard है, they are of all uniform color and that is the sand color. ये हमने अभी पढ़ा भी है. ठीक है? Desert animal are generally the color of the desert. ठीक है? इसमें से कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. सो यस, विदाउट एक्सेप्शन वी कैन से दैट कि जो अपर प्लंज है एवरी बर्ड का एंड फर ऑफ ऑल द स्मॉलर मैमल्स एंड द स्किन ऑफ ऑल द स्नेक्स एंड लिजर्ड इज ऑफ वन यूनिफॉर्म सैंड कलर. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The passage includes some words that are opposite of each other. From the sets A to E below, identify a set of word pair that does not belong to this category. ठीक है? तो आपको ये पैसेज में एंटोनिम्स गिवन है, दैट मीन्स अपोजिट ऑफ ईच अदर, और इस सेट में से आपने आइडेंटिफाई करना है एक पेयर जो इंटोनिम्स में नहीं आता. ठीक है? कंसील्ड एंड कॉन्स्पिशियस इज अपोजिट, डे एंड नाइट इज अपोजिट, ब्राइट एंड विविड अपोजिट नहीं है. सो इसका एक ही सेट ढूंढना था, तो सी पार्ट हो गया ब्राइट एंड विविड. नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. Although some big caterpillars are brown and therefore have the advantage of being conspicuous among the green leaves, yet these defenseless creatures have to. ठीक है? उनको अपने आप को कंसील करना पड़ता है डे एंड नाइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर. ठीक है? ये अभी हमने पढ़ा भी है. सो व्हेन द मॉर्निंग लाइट कम्स एंड दे क्रीप डाउन द स्टेम्स, उनको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. अंडर सच सर्कमस्टांसेस द ब्राउन कलर बिकम्स अ प्रोटेक्शन. ठीक है? समझ आया? सो व्हेन द मॉर्निंग लाइट कम्स दे क्रीप डाउन द स्टेम ऑफ द फूड प्लांट and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color becomes a protection. Clear? So I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, या ये भी हमने कवर कर लिया. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day come first and that the brown color is later adaptation and it helps in protection. ठीक है? समझ आ गया? So yes, it lie concealed during day and feed at night to protect themselves from predators. Why does the author conclude that the habit of caterpillar to conceal themselves by day came first and the brown color is a later adaptation? ये आपकी लास्ट लाइन है पैसेज की. Based on the reading of the passage, examine in about 40 words. तो अभी ये भी पढ़ा था हमने, जितने भी बड़े बड़े caterpillars हैं, they are all of them are not brown, some of them are green. ठीक है? और जो brown होते हैं they basically feed at night. ठीक है? अपने आप को दिन में कंसील करके रखते हैं. ठीक है? सो दैट दे बिकेम सेफ फ्रॉम द प्रेडेटर्स. तो यही बताया गया. और कुछ कैटरपिलर बिग्स होते हैं बट ग्रीन इन कलर, जिससे ऑथर कंक्लूड करता है कि सम ऑफ दीज इवॉल्व विद टाइम टू बिकम ब्राउन फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है? सो नॉट ऑल बिग कैटरपिलर्स आर ब्राउन, फीड एट नाइट एंड लाई कंसील ऑन द ग्राउंड. सम कैटरपिलर्स आर बिग बट ग्रीन, विच मेक्स द ऑथर कंक्लूड दैट सम ऑफ दीज इवॉल्व विद टाइम टू बिकम ब्राउन फॉर प्रोटेक्शन. क्लियर? अब नेक्स्ट में आता है, द राइटर सेज इट माइट इंडीड बी आर्ग्यू दैट द कैटरपिलर हैविंग बिकम ब्राउन concealed themselves on the ground and that we were revering the state of things. ये paragraph 3 में mentioned है, right? Select the underlying principle in the natural evolution the scientist Canon Tristram is referring to. तो यहाँ पे evolution दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे कौन से evolution के principle को Canon Tristram एक scientist refer कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्शन है ये नहीं, रिग्रेशन भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, दिस इज अ प्रोग्रेशन. ठीक है? सो बेसिकली दे चेंज देयर कलर, दे आर एंड अडॉप्ट डिफरेंट कलर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ.
क्लियर. एंड लास्ट आता है वेयर डू द बिग ब्राउन कैटरपिलर हाइड देमसेल्फ एज सून एज द डे ब्रेक. तो ये अभी हमने पढ़ा अमंग द स्टेम्स ऑफ द प्लांट, ये मेंशन है पैराग्राफ नंबर 3 में. ठीक है. सो व्हेन द मॉर्निंग लाइट कम्स दे क्रीप डाउन द स्टेम ऑफ द प्लांट अमंग द थिक हर्बेज ड्राई स्टिक्स एंड लीव्स. ये अभी हमने रीड भी करा था. ठीक है. यहाँ पे हमने मेंशन भी किया था इसको कि व्हेन द मॉर्निंग लाइट कम्स दे क्रीप डाउन द स्टेम ऑफ द food plant and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves. Clear? So यहाँ पे हमारा passage 1 complete होता है. Now we are moving on to passage 2. अब passage 2 की बात करूँ, again passage 2 is for 10 marks. अब passage 2 read करने से पहले इसका हम first question देखते हैं. There are 4 paragraphs. Complete the following analogy appropriately based on your understandings of paragraph 1 and 2. So question 1 करने के लिए हमें paragraph 1 and 2 को बहुत ढंग से read करना है. We can say that the success of the recovery plan put forward by WTTC to reactivate tourism in world after the pandemic derives its strength from the robust and dash especially in 2016. ठीक है. So yes, let's read this. First two paragraph. India is a major tourist destination and is therefore a strategic ally to strengthen the recovery of travel and tourism activity in the region. In 2019, India's travel and tourism sector made up to 6.8% of the total GDP and 8% of the total employment. The government of India's leadership is instrumental and essential for us to be able to work towards a single agenda and reactivation of international travel to benefit the millions of people in India who depend on the sector for their livelihood, said a spokesperson from WTTC. In India, travel and hospitality contribute 9.3% to the overall Indian GDP and accounts for over 8% of India's total employment. It is therefore imperative to come together and focus on the revival of the sector across the globe with optimism, hope and unity in solidarity of the industry. द रिकवरी प्लान, अभी यहाँ से रिकवरी प्लान की बात हो रही है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था. द रिकवरी प्लान प्रेजेंटेड टू द टूरिज्म मिनिस्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड इंक्लूड्स the focus on key measures to reactivate international tourism. The measures include globally recognized international testing program, strengthening and standardizing protocols between countries to reduce risk and regain confidence from the traveler, and international coordination for the reopening of the sector with the highest priority to health, safety and certainty for the traveler. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग, इन 2 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें उस एनालॉजी को कंप्लीट करना है. ठीक है. सो लेट्स सी दैट एनालॉजी अगेन. एन एनालॉजी सेज दैट कि भाई अभी हमने बोला द सक्सेस ऑफ रिकवरी प्लान पुट फॉरवर्ड बाय WTTC टू रीएक्टिवेट टूरिज्म इन द वर्ल्ड आफ्टर पैंडेमिक derives its strength from the robust and dash especially in 2016. तो 2016 से रिलेटेड अभी कोई भी पॉइंट नहीं आया है. सो लेट्स रीड द थर्ड पैराग्राफ ऑल्सो. सो यस, 2016 से कोई भी नहीं आया, 2019 आ गया है. Yes, according to data, the travel and tourism sector generated 14.1 trillion, that is US dollar $208.9 billion in 2016, which is world's 7th largest in terms of absolute size. The sum is equivalent to 9.6% of India's GDP. That means increase हुआ है इसमें. ठीक है. Additionally, the sector created 40.3 million jobs in 2016, which ranks India second in the world in terms of total employment generated. The sector accounts for 9.3% of the country's total job. India's travel and tourism sector was also the fastest growing among, अभी ये fastest growing है amongst the G20 countries. Clear? Growing by 8.5% in 2016. 2016 में इतना रेट इंक्रीज हुआ है. 6.7 ग्रोथ इज फोरकास्ट फॉर 2017 इन दिस सेक्टर. अब एक ही पैराग्राफ, हमें आंसर तो मिल गया है. खैर, अब एक ही पैराग्राफ बचा है, वो भी रीड करते हैं. द प्रेसिडेंट एंड द CEO ऑफ WTTC, David Scoville, says, we encourage the Indian government to continue to adopt policy that encourage travelers such as the new visa regime, enable investment in vital infrastructure and allow companies to do business. India is a beautiful and diverse tourism destination. With the right policies in place, it will no doubt continue to grow towards ranking even higher in terms of its tourism economy. Clear? So first का हमने आंसर मिल गया है. Let's read it. So the fastest growth of this sector among the
G20 countries, especially in 2016. Fill in the blanks with the appropriate option from those given in bracket based on your understanding of paragraph 2. तो पैराग्राफ 2 में ये बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिवाइवल ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद ऑप्टिमिज्म, hope and unity among the countries of the world with a special focus on India because this sector contributes 9.3% to the overall Indian GDP. इतना contribute करता है and accounts over 8% of India's total employment. तो ये fact है या opinion है? So ये किसी का opinion नहीं है. This is a fact. तो ये हो गया fact. और जो fact है ना वो objective detail होती है, वो judgment नहीं होता है. So the answer is a fact and an objective detail. Clear? नेक्स्ट आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स. द प्लान प्रपोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट will help revive tourism on international scale and reactivate it with a key focus on the travelers. तो ये बोला है, अभी हमने पढ़ा भी है कि जो फोकस है मेन वो सेफ्टी पे है और हेल्थ पे है ट्रैवलर्स की. ठीक है. फॉर दिस द प्लान इंक्लूड्स मेजर लाइक स्टैंडर्डाइजिंग प्रोटोकॉल्स बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस रिस्क एंड रीगेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द ट्रैवलर्स, the highest priority to their health and safety and better coordination among the countries. So you can read this in the third paragraph as well. So based on the survey result, which two policies will gently enhance travel and encourage travelers according to David Scoville. So David Scoville का अभी हमने पढ़ा भी, the new visa regime of the Indian government and creating a business friendly atmosphere for the international companies would encourage travel and enhance travel according to this person David Scoville. Right? Infer one reason for the following based on the information in paragraph 1. The WTTC acknowledges the importance of Indian tourism industry in reviving international travel. So इसके according to the paragraph 1 इसमें यही बोला कि इंडिया जो है वो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे वर्ल्ड का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आपने इसमें से एक बताना है व्हाट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाइज. ठीक है. अब मैं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. इसमें आपको ये फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस वगैरह बताए हुए हैं. इसमें आपको पूरी हॉस्पिटैलिटी बताई हुई है, एवरीथिंग. ठीक है. इसमें आपको टेक्नोलॉजी बताई हुई है और इसमें इस ट्रैक्टर. सो फुल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो सेकेंड इमेज में बताया हुआ है. सो ओनली 2 कैन बी द आंसर. सो दैट इज बी पार्ट. क्लियर. Info one benefit and one drawback of Indian travel and hospitality sector's remarkable growth in 2016 as compared to 2019. Answer in about 40 words. तो अभी बताया कि इंडिया का जो डिसएडवांटेज था इस बात पे वो ये था कि इस सेक्टर में सिर्फ 6.8% कंट्री की टोटल जीडीपी आई है 2019 में एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रीब्यूशन इन 2016. 2016 में 9.6% जीडीपी थी. ठीक है. और बेनिफिट ये है कि दिस सेक्टर अकाउंट फॉर 9.3% ऑफ द total job in the country. Clear. Which of the following is the main takeaway from the study mentioned in the passage? अब इनमें से main takeaway क्या है from the passage? ठीक है. which is mentioned in the passage. It is the fastest growing sector among G20 countries. The travel and tourism sector generated worth rupees 14.1 trillion in 2016. Travel friendly policies will help India create more employment in this sector. No. The reactivation of international trade needs a single coordinated agenda. So इसका correct answer है D part. This is the thing which is not mentioned in the passage. Clear. Now we are moving on to section B. आपका जो section B है again it is of 20 marks. Section B आपका दो में divide है. One is grammar and the other part is writing. Grammar B 10 marks का है, writing B 10 marks की है. So let's start with the grammar. और grammar की बात करूँ तो there are 12 questions. You only have to attempt 10 question. और सारे के सारे question 1 mark each है. So let's discuss all 12 questions now. Complete any 12 of the following task as directed. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the sentence. Jasprit Bumrah dash 2 tickets before rain dash the play. ठीक है. तो रेन एक तो टुक है और एक इंटरप्टेड है. तो जसप्रीत बुमराह टुक 2 टिकट्स बिफोर रेन, ये हो गया पास्ट टेंस. ठीक है. बिफोर रेन इंटरप्टेड द प्ले. ठीक है. क्योंकि स्पॉइल नहीं होता, इंटरप्टेड ही होता है. सो दिस इज द करेक्ट वन. Read the conversation between a mother and her son. Complete the sentence by reporting the dialogue. Mother: where did you go around noon?
Son, I was with Ajay at his house watching a movie. So mother asked Rahul. अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट में चेंज करना है, ठीक है, और क्वेश्चन को स्टेटमेंट में जब चेंज करते हैं तब दैट नहीं लगता, तो यहाँ पे भी दैट नहीं लगेगा. सो मदर आस्क्ड राहुल, और WH फैमिली से क्वेश्चन है तो सेम वर्ड एज इट इज आ जाएगा, वेयर. जब हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करते हैं ना, तो वर्ब और सब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज हो जाती है. डिड यू की जगह यू पहले आ जाएगा, और यू को हम चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है. वेयर ही हैड, ठीक है, हैड के साथ गो नहीं लगेगा, गॉन लगेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है हैड के साथ. वेयर ही हैड गॉन, ठीक है, अराउंड नून. राहुल रिप्लाइड दैट, ठीक है. आई वॉज किस में चेंज होगा, आई चेंज होगा ही में, वॉज किस में चेंज होगा, हैड बीन में. तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट सेम रहता है. ही हैड बीन विद अजय एट हिज हाउस वॉचिंग अ मूवी. क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन. Rui herb benefits are varied and plentiful. It has loaded with nutrients. No. It is full with nutrients. No. It is encumbered with nutrient. No. It is loaded with nutrients. This is correct. तो अब it है, it के साथ has नहीं लगेगा, it has many के साथ with नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा. It is full with नहीं हो सकता, it is encumbered with नहीं हो सकता, so it is loaded with nutrients. Right. Now select the option that identifies the error and supply the correction for the following line from an academic report. अब ऐसे में जब ऑप्शंस दिए होते हैं ना, मेक श्योर दैट यू डू नॉट सी ऑप्शन फर्स्ट. पहले एरर ढूंढो, फिर ऑप्शन में वो चेक करो, तभी सही निकलेगा, वरना एक एक करके आप सारे ऑप्शन अप्लाई करोगे और वो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है. सो येस, नाउ लेट्स रीड दिस. It is quite clear that those students who are research for a PhD, who are researching for a PhD read more articles than either junior lecturers or other student. So researching, तो ये ऑप्शन सी में mentioned है, so answer is researching. Clear. Now we are moving on to the next part, ठीक है, और ये फिफ्थ पार्ट है. complete the given narrative by filling the blanks with the correct option. The modern agriculture practices excessive use of fertilizers and pesticides, ठीक है. they है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगता है हैव, ठीक है, प्लूरल के साथ लगता है हैव, तो हैज वाला नहीं होगा, हैज वाला नहीं होगा, ये दो हैव है, ठीक है. एडवर्सली अफेक्टेड द सॉइल, परफेक्ट में नहीं आएगा, ये वो होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, सिर्फ परफेक्ट में आएगा, सो ये होगा हैव एडवर्सली अफेक्टेड द सॉइल. Clear. Let's move on to sixth part. Fill in the blanks by using the correct option from the correct form of the word in the bracket for the concluding portion of a letter. It is high time that the concerned authority should wake up to this social problem and try to rein in the rising prices so that the middle class it आता है, it के साथ do का कौन सा फॉर्म आएगा, does, ठीक है, वर्ब के साथ SES लग जाता है, does है, and middle class does suffer तो नहीं होगा obviously, तो does not suffer. Clear. Now next question is report and complete the dialogue between two sisters by fill in the blanks. Manorma, where are you going to? Anu, I am going to the market. Do you want anything? So Manorma asked Anu where, as it is रहेगा क्योंकि WH फैमिली से शुरू है, ठीक है. U और R के बीच में जगह वो चेंज हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, क्योंकि हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं, और यू की जगह आ जाएगा वेयर, ठीक है. वेयर शी, आर किस में चेंज हो जाएगा, कैन एनीवन टेल मी, आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, वेयर शी वॉज गोइंग. Manorma asked Anu where she was going. Anu replied that she was going to the market and further asked, ठीक है. अब WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं शुरू होता तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक है. इफ या वेदर कुछ भी लग सकता है. इफ शी वॉन्टेड एनीथिंग, ठीक है, इफ शी वॉन्टेड एनीथिंग, सो वेयर शी वॉज गोइंग, एंड इफ शी वॉन्टेड एनीथिंग, ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Identify the error in the given sentence from a newspaper report and supply the correction and use the given format for this response. तो आंसर शीट में ऐसे ही आपने अपना आंसर करना है, ठीक है.
So there have also been several films, televisions and theatrical production and even an opera based over the novel. ठीक है, so there have also been several films, television and theatrical production, even an opera based over the novel नहीं होता, based on the novel होता है. तो आंसर शीट में आप बिल्कुल ऐसी टेबल बना के ऐसे ही आंसर करने वाले हो, ओवर का और. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है. Faiz shared some information with Tariq about his long holiday. Report Tariq's question. Tariq, friend, I have been traveling for a month, so I am tired. So हम ये बोल सकते हैं कि तारिक ने अपने फ्रेंड से पूछा, where have you been all this while? ठीक है, so where have you been all this while? Next आता है, identify the error in the given sentence and supply the correction. The company could not be able to sell as many products if they don't find the right marketing professionals quickly. तो could not नहीं होगा, would not होगा. The company would not be able to sell. ठीक है, अब आते हैं 11th पार्ट पे. 11th पार्ट ये बोलता है, select the correct option to complete the narration of the dialogue between a teacher and her class. Children, we all pledge to save our trees because they are lungs of the city. Teacher, let us start today by planting a sapling each. The children pledge to save trees. ठीक है, अब why? Because trees are the lungs of the city. ये है universal truth. तो इसको टेंस में इसका टेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, trees are the lungs of the city. Then teacher said that. अब टीचर ने क्या बोला कि let us में क्या चेंज होगा? They should start. ठीक है, they should start by planting a sapling that day. ठीक है, by planting a sapling each that day. Today किस में चेंज हो जाता है? That day में. Identify the error in an advertisement for a cosmetic item and supply the correction for the following sales offer. This colon will last the entire day. Available at 15% off. तो colon नहीं होता, colong होता है. COLONGE. This colong will last the entire day. Available at 15% off. Clear? Now we are moving to the next part of the सेक्शन बी. और जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो राइटिंग है. राइटिंग में 2 क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स ईच है, 5 मार्क्स ईच है. टोटल राइटिंग 10 मार्क्स की है. एक क्वेश्चन आपका लेटर से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो एनालिटिकल पैराग्राफ है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर. और लेटर में भी 2 ऑप्शंस हैं और करके 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. सो पहला क्वेश्चन है, योर ग्रैंडफादर इज वेरी अपसेट अबाउट द राइजिंग प्राइसेस एंड कीप्स thinking of his olden times when things were very cheap. You are convinced that inflation has made life difficult for common man. Write a letter in 100 to 120 words to the editor of National Daily describing the difficulties faced by poor families. You are Prabhat और प्रेरणा ऑफ 679 लाजपत नगर 1 न्यू दिल्ली. तो आपको यहाँ पे एड्रेस गिवन है. ठीक है, ये है आपका एड्रेस. 3 लाइनों में आराम से हो जाएगा. आपका नाम गिवन है, इधर प्रभात और प्रेरणा. ठीक है, द एडिटर ये हो गया. रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, नेशनल डेली में आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख लेना. ठीक है, अब क्या सब्जेक्ट है? डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पुअर फैमिलीज ड्यू टू राइज इन प्राइस. ठीक है, ड्यू टू राइज इन प्राइस या फिर आप ड्यू टू इन्फ्लेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पता है बट जो यहाँ पे लेटर अटेम्प्ट किया हुआ है उस लेटर में कुछ मिस्टेक्स हैं. लेट्स फाइंड आउट दोज मिस्टेक. सो सबसे पहली मिस्टेक है कि जो आपका सेंडर एड्रेस है ना वो 3 लाइन्स में होना चाहिए और यहाँ पे वो 2 लाइन्स में है. ठीक है, तो ये 3 लाइन्स में होना चाहिए. तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे हाउस नंबर 679 लाजपत नगर फेस 1 नीचे चला जाएगा और उसके नीचे न्यू दिल्ली हो जाएगा. ये हो गई आपकी 3 लाइन्स. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन. उसके बाद आप डेट लिखोगे, बिल्कुल एज इट इज लिखोगे और मेक श्योर कि भाई मंथ के बाद आप कॉमा लगा दो. फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. परफेक्ट. रिसीवर एड्रेस 3 लाइन्स में. उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट राइजिंग प्राइसेस. ठीक है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट. यू हैव टू लीव अ लाइन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हमने लिखा सर और सर के नीचे से आपने शुरू करना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कॉमा I wish to draw the attention towards the inflation which has made life difficult for common man. ठीक है, 3 पैराग्राफ्स में लिखना है. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया. यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आपका सेकेंड पैराग्राफ.
ठीक है. द शार्प राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू मेक बोथ हिज ends meet. He cannot bear even the daily expense of his family. This is giving rise to disappointments and dejections in their life. Corruption is also on the rise, so as to avoid financial crisis, people are turning towards bribery, which is the root cause of all evils. The society is taking a bad turn only because of inflation. यहाँ पे आपका सेकेंड पैराग्राफ ओवर होता है और यहाँ से आप थर्ड पैराग्राफ शुरू करते हैं. ठीक है. It is high time that the concerned authority should wake up to this social cause and try to put rein to the rising prices so that people can lead a comfortable and peaceful life. After that you have to leave a line thanking you. यहाँ जगह मत छोड़ना. ठीक है. और यहाँ स्पेस भी मत छोड़ना. Yours faithfully and your नाम प्रेरणा या प्रभात जो भी गिवन था, यहाँ पे नाम भी गलत है. ठीक है. अब इसके और पार्ट में देखते हैं क्या लेटर आया हुआ है. ठीक है. और पार्ट में ये लेटर आया हुआ है. राइट अ लेटर टू अ नेशनल डेली. नेशनल डेली में अगेन आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख लेना, द टाइम्स ऑफ इंडिया. और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिखना, पूरा लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन एंड व्यूज ऑन द इंक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. ये हो गया आपका सब्जेक्ट. ठीक है. ये हो गया सब्जेक्ट. न्यूज़पेपर का नाम हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा लिख लेना आप. Right from a small children to an adult or even an old man, everyone wants gadget, only cell phone, iPad, laptop, iPod, etc. There also has a negative effect on social relationship. Using your own idea, write the letter on 100 to 121. You are Sambhav और सुनैना. ये आपका नाम गिवन हो गया और ये आपका एड्रेस गिवन हो गया. ठीक है. सो सबसे पहली चीज, इस लेटर में मिस्टेक्स है. अब हमें वो मिस्टेक्स देखनी है. सबसे पहले जो आपका सेंडर्स एड्रेस है ना, वो 3 लाइंस में होता है और यहाँ पे आपका जो सेंडर एड्रेस है ना, वो 2 लाइंस में है. तो हम इसको 3 लाइंस में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं हाउस नंबर 232, लाजपत नगर फेज 2 हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे न्यू दिल्ली. आफ्टर दैट वी हैव टू लीव अ लाइन. डेट एज इट इज आएगी, बस मंथ के बाद कॉमा जरूर लगा लेना. उसके बाद फिर लाइन छोड़ना. द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये भी परफेक्टली रिटन है. ठीक है. सैल्यूटेशन पहले नहीं आता, पहले सब्जेक्ट आता है. और सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी. एंड सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो. सब्जेक्ट के बाद आपने फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है और सैल्यूटेशन में आएगा सिर्फ सर. उसकी नेक्स्ट लाइन से आपने पहला पैराग्राफ में ही लिखना है. थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स द इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. यहाँ पे आप लेटर टू द एडिटर शुरू करेंगे. एक ही लाइन से याद कर लो वो लाइन. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू showcase the general anguish of the general public on the increased dependency of humans on technology. और फिर यहाँ से आपका सेकेंड पैराग्राफ शुरू हो जाएगा. We use internet for any type of information which we find only a click away. Everyone, whether a child or an adult, wants gadgets like cell phones, iPod, laptop, etc. No doubt technology is boon to mankind and has a great future ahead. But in my opinion, we should not depend on it, as excess of everything is bad. It is making everyone lazy. On the other hand, cybercrime are also growing. The key word for this is caution. ठीक है. फिर यहाँ पे आपका थर्ड पैराग्राफ. We must, यहाँ तक, we must take judicious use of technology and should not totally depend on it. We must believe in natural and simple living. I hope you will publish this letter in your newspaper for better future of human beings. After that you have to leave a line. ठीक है. थैंकिंग यू लाइन छोड़ के लिखोगे आप. योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर फेथफुली, कुछ भी लिखो और उसके नीचे आपका नाम आ जाएगा संभव या फिर सुनैना. क्लियर? Now we are coming on question number 5. Question number 5 आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है. There are 2 questions. ठीक है. और करके आपने एक अटेम्प्ट करना है. ये भी 5 मार्क्स का 100 to 120 वर्ड्स में करना है. मेक श्योर आप एनालिटिकल पैराग्राफ का टॉपिक जरूर दो. टॉपिक के सीधे सीधे बनते हैं 1 मार्क. क्लियर? द पाई चार्ट बिलो शोज द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव. The table shows how these causes affect 3 regions of the world during 1990s. On the basis of the pie chart, write an analytical paragraph on
पर्टिकुलर टॉपिक भी गिवन है, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। ये टॉपिक देके अंडरलाइन कर देना, सीधा 1 मार्क बन जाएगा। अब आपको जो भी पाई चार्ट दिया हुआ है उस पाई चार्ट को स्टडी करो, समझो क्या दिया हुआ है, उसको एनालाइज करो, जो समझ आया वो ही लिख दो। सबसे पहले ये बताओ कि दिस पाई चार्ट डिपिक्ट्स the causes of worldwide land degradation। ठीक है, फिर मैक्सिमम 35%, मैक्सिमम इज 35%, मैक्सिमम रीजन जो लैंड डिग्रेडेशन का है वो ओवर ग्रेजिंग है, और सबसे मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो वो अदर्स में आता है। तो प्रॉपर ऐसे लिखना है। सो when the fertility and quality of soil is adversely affected, it is called degradation. The modern agriculture practices, excessive use of fertilizers and pesticide has adversely affected the soil. The farmland is degraded in the world today for many reasons. Deforestation is one of them. It is taking place at a faster rate due to increasing demands of timber, fuel and forest product. Overgrazing is another reason for the poor quality of soil. It results into reduced growth of vegetation, soil erosion and degradation of land due to cattle movement. The pie chart shows that there are 4 main causes of farmland becoming degraded in the world today. Globally, 65% of the degradation is caused by too much animal grazing and tree clearance, constituting 35% and 30% respectively. A further 28% of global degradation is due to over-cultivation of crop, and other causes account for only 7% collectively. Clear? अब इसके और पार्ट में एक और एनालिटिकल पैराग्राफ है, वो देखते हैं क्या है। The pie chart below illustrate the number of journal articles read per week by all students, PhD students and junior lecturers at an Australian university. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Write an analytical paragraph in 100 to 120 words that how these articles can help students. Number of journals article read by students is this: 67%, 21% and 12%, and number of journal articles read by PhD students and number of journal articles read by junior student. Clear? This is 1 to 5, 6 to 11 and this is 12 plus. सो रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने टॉपिक दे दिया सीधे 1 मार्क। उसके बाद जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है वो 5 मार्क्स का होगा। अब बाकी 4 मार्क्स पूरे पैराग्राफ के। यू हैव टू राइट इन अ सिंगल पैराग्राफ। द 3 पाई चार्ट इलिस्ट्रेट हाउ मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम academic journal are read weekly by PhD students and junior lecturers compared to other students at an Australian university. For example, the overwhelming majority of those studying doctorates read at least 12 articles per week in comparison with the average student. The figure were 80% and 12% respectively. Furthermore, only 5% of PhD level students read between 1 and 5 articles, whereas the average of all students in this category is a hefty 67%. तीनों pie chart को explain करो. Meanwhile, for junior lecturers, the pattern appears to be slightly different. Most read 6 or more articles per week, that is 99%, but out of this total 20% read 12 or more, which is almost a third of the corresponding figure of PhD level student. It is clear that those students who are researching for a PhD read more articles than either junior lecturers or other students. Clear? ये बहुत easy था writing part. Now we are moving on to section C. Section C आपका literature है 40 marks का। इसमें आपकी footprints without feet and first flight दोनों बुक्स कवर होंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो 5 मार्क्स का है, RTC है, चैप्टर में से या तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है और करके फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। ठीक है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है जो भी आता होगा। सो लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है। Our entire class is quaking in its boot. From Diary of Anne Frank, पहली लाइन से ही पता लग गया। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth.
यहाँ पे मेंशन है कि ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक है, बट पेपर में मेंशन नहीं होगा. मेक श्योर यू रीड ऑल द चैप्टर्स वेरी थॉरली. सो व्हाट डज द फॉलोइंग इम्प्लाई? Cian and Jack is taking their entire holiday savings on their bed. इसका मतलब क्या हुआ? पूरी हॉलीडेज उन्होंने सेविंग करी अपनी बेड पे, एंड दे बोथ थिंक द अदर वन विल पास. ठीक है. सो Cian and Jack is taking their entire holiday saving on their bed implies that they both think that the other one will pass. Annie says that there were so many dummies in the class about the quarter of them should not be promoted. If she being rude or brutally honest. So she is being brutally honest. Many students in her class doubted if they would be promoted to the next class. They remained anxious and would discuss this all day. They would make bets on who would be promoted. Cian and Jacques have even staked their entire holidays saving on this bet. Clear? Now we have to state true or false. None of the option A to D apply the reality. Showcase the reality. The teacher will decide whom to promote the next form. Yes, the teacher will decide. So ये तो false ही हो गया because A applies showcase the reality. Clear? अब बात करते हैं fourth part की. Which emotion is portrayed by expression quaking in their boots? Quaking in their, why students were quaking in their boots? Because they were nervous, they were anxious. ठीक है, तो fearness और nervousness दिखाई गई है. अब और पार्ट में देखते हैं कौन से चैप्टर का है, जो आता होगा वो ये अटेम्प्ट करना. She was not convinced. No, she replied. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. The necklace chapter है. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewel." She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." So why did she need the jewels? To go to a party of rich people? So A part is the correct answer. Why did what did Matilda's husband suggest her? That she should borrow jewels from her friend Madame Forestier. Read the following description A to C and identify कि इनमें से कौन सा correspond करता है extract से. क्या जो extract है वो debate है? नहीं, वो debate नहीं है. वो soliloquy भी नहीं है. वो conversation है between husband and wife. So a dialogue is a conversation between two or more people. Clear? उसके बाद नेक्स्ट आता है what kind of a person is Madame Loisel and why is she always unhappy? So what kind of a person is Madame Loisel? She was pretty young lady, but she belonged to a poor family. She was married to a clerk. She had great aspiration in life. Her poverty and lack of recognition made her angry and unhappy. Clear? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये पोयम से है. ठीक है, 2 पोयम्स है 5 मार्क्स की. एक अटेम्प्ट करनी है आपने. ठीक है, तो ये फुटप्रिंट्स फर्स्ट स्लाइड से हो गया आपका. इंक ट्रिकल डाउन. इंक से ही समझ आ गया. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यहाँ चैप्टर का नाम मेंशन्ड है. पेपर में नहीं होगा. सो मेक श्योर यू रीड एवरीथिंग वेरी थॉरली. ओके. सो इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in dungeon, with a clatter and a clang and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. So fill in the blanks with suitable words on the basis of your understanding of the given lines. The outcome of the clash between Custard and the pirate was, अब basically क्या था? The pirate was gobbled up by the Custard. ठीक है. What is the significance of the use of the word trickle down mousehole to describe the reaction of Belinda's pet? How does this word choice contribute to the overall situation in the poem? So yes, on seeing the pirate, Belinda's pet trickled down or mousehold themselves, proving their cowardice. This is in contrast to their description at the beginning when they were clashing, chasing lions and showing off their rage. It makes the situation ironical. The reader easily deduces that it as the poet refrained from commenting on it. Here, now we are on match the following. We have to match the figure of speech with actually कि कहाँ पे वो use की गई है. ठीक है. So alliteration, words like and like used repetitively. No. Repetition of the word K and S. तो K and S का जो repetition of word है, क्या वो alliteration है? Let's see that. Ink trickled down to the bottom of the household and little mousehold blinked strategically. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है. So match the figure of speech with their correct definition. अच्छा, हमें definition से करना है that have been used by the poet in the given extract.
सो alliteration हो गया repetition of the sound, KNS repetition हो गया word like and like used repetitively. Onomatopoeia में हो गया use of sound words like clatter, snorting, jangling, and consonant हो गया repetition of the sound N and L. Clear? समझ आया? So yes. Now fourth part, comment on the poet's use of language in these lines. So the poet has made great use of figurative language. Similes जैसे like snorting, like an engine use किया गया है, like iron in a dungeon use किया गया है, like robin at a worm. ये basically जो है ये दिखा रहा है कि भाई क्या टेंशन थी उनके बीच में, और हर जगह सिमिली यूज की गई है. स्नॉटिंग, क्लैश, क्लैंग, जैंगल, ये ओनोमेटोपिया यूज किया गया है, साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं, एंड इससे जो सर्कमस्टांसेस है वो और ज्यादा ड्रामेटिक हो रहे हैं. क्लियर? अब इसके और पार्ट में देखते हैं क्या पोएम है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स. द बॉल पोएम. Balls will be lost always, little boy, and no one buys the ball back. Money is external, he is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. Clear? In what context does the poet say money is external? तो money की बात करें तो money can bring just external happiness by buying us possession, but it cannot make the boy recover from his unhappiness due to the loss of a valued things. Clear? Now, what is the significance of the use of symbolism by the poet to describe loss, responsibility, and survival in the given extract, and how does it contribute to the overall mood and the tone of the poem? Answer in about 40 words. So, the ball symbolizes the boy's childhood days that are now gone. It is the loss of the boy's memories of those days and his innocence as he gains life's wisdom on how to experience loss and survive. The message is universal, so the mood and the tone are sombre. Clear? Next आता है complete the sentence with appropriate option. If one were to choose an option that best fits the sense of the given extract, it would be what? Responsibility is self-taught. Yes, responsibility is self-taught. तो यही होगा आंसर. To what effect has the poet used the poetic device apostrophe in the given extract? So apostrophe कहाँ use किया गया है? The apostrophe is a literary device in which a physically absent person is addressed. The poet addresses the boy who was not physically present with him and tries to gently advise him on how to deal with the loss. Balls will be lost, little boy. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है खत्म. Now we are moving on to question number 8. In question number 8 there are 5 parts and out of 5 you have to attempt any 4. 40 to 50 words में आंसर करना है and each question is of 3 marks. So let's start with the first question. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane in the storm. So as the pilot की बात करें तो as the pilot is the author, entered the storm, his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instrument, they all had stopped to function due to storm. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड. सो वली वाज ऑफेंडेड बाय द रिमार्क्स ऑफ द एल्डरली वुमन. She replied that there was nobody in the bus who was a child. She told her that she had paid her fare of 30 paise like everybody in the bus. How did Custard, next question, how did Custard prove the cowardly dragon tried to be untrue? So Custard was making a lot of clatter and clinkering and he was squirming. He jumped up, snorting and clashing his tail. He attacked the pirate. It terrified the pirate. He fired at Custard and missed. Custard killed him by swallowing him up, and it shows that he was brave. Next question, write the central idea of the poem for Anne Gregory. So people are often charmed and fascinated by the beautiful appearance of a person. We should love person for his or her qualities of head and heart and not go after his or her appearance for appearance changes. It is transitory, but one's qualities are lasting and remain with him or her till he or she lives. Then the last question from this is, how does Natalia react when she comes to know that Lemov had come to propose her for her hand? After Lemov's departure, when Natalia comes to know that Lemov had come to Shubukov to seek her hand, she started weeping and asked her father to call him back. She was very excited because she was desperate to marry him. Her father blessed them to be
happy. Clear? Then we are moving on to question number 9. जो question number 9 है आपका footprints without feet से. There are 3 questions. 40 to 50 words में answer करने हैं and each is of 3 marks. And out of 3 you have to attempt any 2. Clear? So first question is, how did Loisel and Matilda arrange the money to buy the necklace? ये last sample paper में भी था. So the necklace that Loisel and Matilda was going to buy to replace the necklace was valued at 40,000 francs. However, they could get it for 36,000 francs. So for them it was difficult task because they possessed only 18,000 francs. So they borrowed money from the money lenders with the high interest rate to buy the necklace. Next question. How was Tricky treated in the first 2 days of his visit to the surgery? So Tricky was given a cozy bed in a warm loose box. He was kept under strict observation for first 2 days and was given a plenty of water, but no food was given to him. The cut down on his diet helped him improve a lot. Third, though Horace planned everything meticulously, why did he fail? So though Horace planned everything meticulously, he failed because of the smart lady. She posed herself to be the owner of the house and convinced him to open the shelf. As she had forgot the password of the shelf, Horace got trapped in her plot. Clear? Now we are moving on to question number 10. Question number 10 आपका फर्स्ट फ्लाइट से है. लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है. 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है. देयर आर 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. क्लियर? Coorg and Assam both are known for plantation of coffee and tea respectively. Though India is known for its tea plantation, yet coffee is considered to be the drink of the elite. Prepare a set of dialogues between a Coorgi and an Assamese based on the part of the chapter Glimpses of India. You may begin like this. Coorgi. Hello, good morning. Are you from Assam? I am from Coorg. Assamese. Good morning. Yes, I am from Assam. ठीक है, the state known for its tea plantation. Coorgi. Oh yes, I know about it. Coorg is also known for coffee plantation along with our cultural background. We are not only warriors, we plant world class coffee as well. Clear? उसके बाद कंटिन्यू करना है आसामी से. We are world famed for our tea gardens to an extent that it has become the part of our culture. People from far and wide visit our state to enjoy the scenic beauty and the sprawling tea gardens. Coorgi. Yes, that is true that India is known for its production of tea, but coffee plantation is also gaining momentum and we have selected class who prefer coffee to tea. Assamese. There is no need to end this discussion. I think both these states contribute equally to the country and are well known for their scenic beauty and plantations. We are both pride of the nation and have our share of dedicated consumers. क्लियर? अब इसके और पार्ट पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है. द मैसेज कन्वेड इन द चैप्टर मिचबिल द ऑटर, वी शुड बी गुड एंड पोलाइट टू आवर पेट्स सो दैट दे विल फील गुड एंड कंफर्टेबल टू लिव was not followed by Belinda in the case of a pet Custard the dragon. If you had to use the message with reference to both the chapter, how will you elaborate it? Also, how it is relevant to both. Clear? So the owner of the Mitchbill, the otter loves him to an extent that he takes care of each and everything needed by the otter. He keeps it close to water and when he is traveling, he ensures its comfort. Mitchbill is happy with its master and follows it everywhere. People become curious about it and inquire about it frequently. On the other hand, Belinda mocks at the dragon to an extent that it has forgotten about its strength. He keeps on crying and asks for safety. He does not have faith on itself. He kills the pirate, still he does not believe that he has done so. The pony dog and mouse and cat all laugh at the dragon and do not acknowledge its bravery in gobbling the pirate and saving all of them. She may not ill-treat her, but she is not polite to Custard and that is why it is not comfortable to live. Clear? Now we are on question number 11 and question number 11 की बात करें तो it is from footprint without feet. Again long question, 6 marks का है. 100 to 120 words में answer करना है. There are 2 questions, you have to attempt any one. So yes, education can change a person's perspective towards life and takes care of all deficiencies. Comment with reference to the chapter Bholi. So this goes perfect in the case of Bholi. Bholi was not treated well by her family members. She was considered a simpleton and weak in her brain. She is dim-witted and ugly looking. No one cared for her well-being. Just to get rid of her, she is sent to school and that becomes a boon in disguise.
She gets educated and there is a total transformation in her persona. She's an epitome of confidence and even stops stuttering. She gets the courage to speak for herself and look into her own interest. She no longer is a toll, she is Sulekha and is adored by her teachers who gave her strength. Beauty and money may give you a sense of pride for a while, but education uplifts and elevates you forever. An educated person is respected by one and all. And इसके और part में है misunderstanding of cultural differences between various races can cause confusion and conflict. Comment based on the chapter The Book That Saved the Earth. So Ebright would never have been successful as a scientist if he would not have been curious and motivated. He never slackened his efforts. Success was not always by his side, but that did not dishearten him. His research on butterflies did not pay him dividends, but that was not a deterrent. His advanced studies on butterflies enabled him to achieve the achievable, and then there was no looking back. There were laurels all his ways. Curiosity is infectious and gives way to one after the other point. From his basic and simple research, he reached the zenith of his career. Had he got disheartened with his earlier failures, he would of have reached where he could. This is the real spirit of being a true scientist and has worked for Ebright as well. क्लियर. तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर 28 ओवर होता है. वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 more sample papers, and if you have any doubt related to this sample paper, you can comment below in the comment box so that I can clear your doubt. Moreover, for these sample paper, PDF of these sample paper with solution and without solution, you can reach us out on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.